thank you for being with us. And again, I welcome all the esteemed members also for joining this webinar. Over to you, Jitendra ji. Thank you, Mohit ji. Thank you, Chairman ji. May I now give a formal introduction of our guest speaker, CA Lokesh Gupta ji. Lokesh Gupta sir is a fellow member of our institute, the ICAI. Sir is a partner with MS Shyam S. Gupta and Company. Sir is also a Bachelor of Law, DISA and FAFD, Forensic Audit and Fraud Detection. Sir is having a vast experience in audit and conducting bank branch statutory audit for the more than 20 years. Conducting concurrent audits, stock audit, internal audits of the bank, both in public and private space with experience of more than 16 years. Sir has conducted audit of specialized units in banks such as currency chest, conducted audit of outsourced area in banks such as agencies involved in refilling ATMs, including audit of ATMs itself. As a speaker and as a faculty, sir has experience of speaker on statutory audit and concurrent audit of bank branches at a large number of seminars organized by branches, study circles, ICAI, etc. Sir has been a speaker on FEMA, FCRA, international taxation and other areas relating to forex in various seminars. Sir has contributed to the professional development as a member of group on certificate course on concurrent audit of bank under IASP. Sir has also contributed as member of group for revision of manual statutory audit of banks for the year 2021 under AASB. May I now request CA Lokesh Gupta sir to please start the session. Thank you, Jitendra ji, for your kind introduction. Thank you, Mohit bhai. And first of all, my thanks to the Gurugram branch for inviting me here to share my views on this annual ritual of a bank statutory audit. Of course, what I find is that generally these seminars are more like a revisionary class, plus to understand what is new about the whole process. So I think similarly we'll try. My role is basically to talk to you about the practical aspects of bank audit. So I really don't need to cover any theoretical, the technical aspects of the bank audit. So I'll actually go through my experience as an auditor there, and maybe I'll try and share with you whatever I have been doing and which have resulted into good results for us. So I'll try and share my viewpoints on these areas. And wherever you have any queries, sir, I would be very glad to answer the queries then and there itself. Don't need to keep it till the last. So we'll only request you to make it as interactive as possible. Would be beneficial for all of us if it is an interactive session. And in any case, I'm not speaking about any technical areas. So that makes it much more easier also for us, anybody of us to ask any questions. Now, is the PPT visible, sir? Mohiji, Jitendra ji? Yes, sir, it is visible. Right. So basically, when we talk about statutory bank branch audit, and we talk about various aspects of it, of course, it's a big area. It's a specialized area. We try and understand that area to the best of our ability, and then we are expected to do the work also in the best possible manner. Now, my concern generally emanates from the fact that the area is very wide. So we have been basically organizing seminars, we participate in seminars, various seminars, and sometimes we have been doing video lectures and everything also to understand the area. So of course, that is something which is expected from everybody. And you would get the knowledge out of it, and whatever changes have happened during the year, so that also you'll be able to get it. But generally when I talk on these seminars, चाहे वो VCM पे हो, चाहे वो physical हो, so generally I have seen people raising a few concerns in regard to bank audit. One is of course a concern which they raise is कि sir time बहुत कम मिलता है, and the activities which we have to perform are numerous. तो हमारे को बैलेंस शीट भी चेक करनी है, हमें P&L भी चेक करना है, हमारे को उसके बाद NPA की भी एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है काफी डिटेल के अंदर. उसके अलावा हमें एक LFAR की भी रिपोर्ट देनी होती है, कुछ बैंक्स के अंदर टैक्स ऑडिट भी हो सकता है करना, और उसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे को साइन करने होते हैं. So generally the time which is given to the public, to the auditors for the purpose of verification of all these areas is very less. And secondly, जो issue आता है कि the branch जो होती है, the audit जो होता है basically,
they are not very keen on getting the audit done. So they are more interested in basically seeing the back of your body. So they are not interested in getting the work done. So kahin na kahin there is a problem in the lack of cooperation also sometimes from the bank. So of course this is something which everybody of us feels. एंड जब हम ऑडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें फेस होती हैं और हम करते आए हैं और आगे भी हम श्योर हम ये सब चीजों को फेस करेंगे और कहीं ना कहीं हमें इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अपने ऑडिट को परफॉर्म करना है. नाउ आई थिंक द क्रिटिकल पॉइंट हियर इज कि क्या हम करें जिससे वो हमारा एक तो जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर हम एक अच्छा ऑडिट कर सकें. तो मैं आपको दो चीजें उसमें कहना चाहूंगा सर. पहली चीज विच इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि भाई कैसे मैं ऑडिट करूं. तो उसके अंदर एक तो जो आपके पास डेट आती है सर, वो चाहे बैंक से 12 अप्रैल आए या 15 अप्रैल आए या 20 अप्रैल आए या 18 अप्रैल आए, to my mind it is not sacrosanct. It is not something which you cannot change, which if you go beyond that date there is going to be a problem. Of course I'm not trying to tell you कि भाई आप delay करें audit को, ऐसा नहीं है. You should try and strive and do the work within the time allocated to you. But for any reason, if you are not able to do so, you have every right to continue with the audit till the point of time you are satisfied and you are ready to give your opinion on the books of account of the branch. तो ये बहुत एक critical factor है, तो उसको सर please sacrosanct मत मानिए. और I can tell you sir, in most of the times I have not been able to cover the audit within the time which was allocated to me. So we have generally taken more time than what was written in the letter, and nothing has been done about it. Of course, there is some pressure which would come from the bank management. That is okay. But अगर आप अपना काम कर रहे हैं, तो nobody can actually challenge your work basically. So you can continue doing it. Secondly, because the time is limited, so how to actually conduct an audit becomes important. How to plan, how to actually perform that audit becomes important. जिससे हमारा सारा coverage भी हो जाए उस लिमिटेड टाइम के अंदर, और एक हम इफेक्टिव ऑडिट करके आए जिसके अंदर जो जो इश्यूज मेरी ब्रांच के अंदर हो सकते हैं पॉसिबली हम उनको वेरीफाई करें. कुछ निकले या ना निकले वो एक बात अलग है, बट हम अपने आप सेटिस्फाइड हों कि हमने एक अच्छा ऑडिट किया है और हमारे रिजल्ट्स अल्टीमेटली वो नजर आए हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, या जो हमने अपनी रिपोर्ट, चाहे वो LFAR हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, मेन ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे कोई और सर्टिफिकेट हो, उसमें वो काम हमारा नजर आए. तो बेसिकली अगर मैं इस चीज को इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ सर, कि जैसे आज हमारे पास कुछ बैंक्स के तो लेटर आ चुके हैं, कुछ बैंक्स के लेटर आर एक्सपेक्टेड विद इन द नेक्स्ट 1 वीक में भी. आपके पास सब बैंक्स के लेटर आ चुके होंगे और जिसके अंदर आपको ऑडिट करने के लिए आपको ब्रांचेस भी बता दी जाएंगी और कब से आपको स्टार्ट करना है और कब तक फिनिश करना है, वो भी सब डिटेल्स आपके पास आ जाएगी. तो पहली एक्टिविटी हमें क्या करनी है, once we receive the letter, appointment letter, is to communicate with the previous auditor. I think that is the first point which everybody should do. I don't know why it is happening that we are also auditors. When we get an appointment letter, we try and communicate with the previous auditor. But a lot of times we are not getting that communication from somebody who has been appointed in our place to do that branch, which we may have done the last year. So I think this is important. This is the first step is to basically communicate with the previous auditor. One, it is mandatory as per our ICAI guidelines. In case we fail to do so, we can be basically penalized for it. It is a professional misconduct. So please keep that in mind. And now it is very easy even, whether you can actually just send an email to the concerned partner of that firm. एंड यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई शिकायत होने वाली है आपसे कि भाई आपने मेरी ब्रांच कैसे ले ली. तो यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद. दूसरी चीज क्या है सर, हम क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिकली वही बात करूंगा आपसे. तो हम क्या करते हैं सर प्रैक्टिकली, कि वी डू नॉट ओनली कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग अ ईमेल. We generally try and get the phone number and we call up the partner and try to understand कि भाई आपने जो लास्ट ईयर ब्रांच की तो उसमें क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस हुई, क्या आपकी क्वेरीज थी, मेजर क्वेरीज क्या थी, क्या चीजें वो हमें सजेस्ट कर सकता है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है. तो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स व्हिच वी कैन टेक फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर. और अगर इस प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो कई बार ये होता है कि हमारी ब्रांचेस जो होती हैं वो रूरल एरियाज में होती हैं,
तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर वहाँ पे रहने के लिए कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ पे खाना आपको ठीक मिल जाएगा, स्पेशली आप वेजिटेरियन हो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको प्रीवियस ऑडिटर्स मिल सकते हैं। और कहीं पे मैं ये भी कहता हूँ, मे बी ऑन अ लाइटर टोन, कि भाई आप ये भी पूछ सकते हैं उससे कि सर वहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह है, और अगर वो आपको 10 जगह गिनवा दे वहाँ की, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये सोचना पड़े कि कहीं ऑडिटर ने भी तो अपना रोल हो सकता है पिछले साल पूरी तरह ना निभाया हो, तो वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑलवेज कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। नाउ द सेकंड स्टेप, आपने कम्युनिकेट कर लिया, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर ऑडिट। अब जब ऑडिट का आप स्टार्ट ऑफ करेंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हमें ऑडिट कब से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब की बार टिपिकली इशू क्या है कि 3 अप्रैल का संडे है। तो अब मैं आपसे पूछूं अगर कि आप प्रैक्टिकली कब ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं इस बार, तो कोई मेरे को अगर चैट बॉक्स में बता सके कि कब से वो ऑडिट स्टार्ट करने को प्लान कर रहा है। आपके पास लेटर आ चुका है, आपने कम्युनिकेशन कर लिया प्रीवियस ऑडिटर से, तो व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट ऑफ विद द ऑडिट? हाँ जी, आई एम वेटिंग सर, प्लीज राइट इन दी मे बी इन दी चैट बॉक्स, और यू कैन, आई डोंट नो वेदर इट इज अलाउड यू टू ओपन योर speaker and speak. So whatever ways, when do you think you should start off with your audit, sir? You must have thought of it. It is not that far off now. So Aman ji कह रहे हैं कि when the manager says reports are ready, letter etc. Very good, sir. This is one approach, of course. कि मेरी रिकॉर्ड ही अगर रेडी नहीं है तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा। वेरी गुड सर। बट अमन जी मैं या हम में से कुछ लोग अभी कतरा रहे हैं, बट आई वुड रियली लाइक यू टू पार्टिसिपेट सर, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरा कोई टेक्निकल सेशन नहीं है, हम प्रैक्टिकली चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी कैन पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड एंड शेयर अवर व्यूज ऑन दिस। तो आई थिंक द क्रिटिकल पॉइंट हियर इज सर कि आई कैन स्टार्ट ऑफ विद द ऑडिट विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द ब्रांच। I can start off with the audit on the same day when I receive the appointment letter. Right. So Mayank ji is saying to ask for advances and balance sheet before it. Very good, sir. So Mayank ji has read my mind. So basically, we don't actually need to visit the branch to start audit. And last 2 years में sir, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक audit किया होगा without even visiting the branch. तो हमने ऑफ साइट ऑडिट की। तो कोरोना का टाइम बहुत खराब था, आई एम श्योर एवरीबडी फेल्ट in pain, or it felt like a very bad time to be in. But somehow we have learned 2-3 good things also, if I can take out of it. One is, of course, that we have learned to do an offsite audit. We have learned to participate in meetings like the meetings we are doing on virtual basis. So these are some of the good takeaways from the that world basically. Okay. So basically this is something which is always there. तो हम क्या कर सकते हैं सर, अभी प्रियदर्शन जी ने भी इसके बारे में कुछ बोला। So basically what I am trying to point out is कि आपको क्या करना है सर, you can start off with the audit immediately on receiving the letter, and how you will actually do it. तो आपको 2-3 चीजें आपको ऑब्टेन करनी है, उनको वेरीफाई करना है, क्या क्या हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रीवियस ईयर की जो आपका फाइनेंशियल ईयर है बेसिकली जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ऑब्टेन करना है एक तो उस ऑडिट के दौरान, उस पीरियड के दौरान जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उसमें कौन कौन से ऑडिट आपकी ब्रांच में हुए। ठीक है, यू कैन कॉल अप द ब्रांच मैनेजर, आस्क हिम ऑन फोन इटसेल्फ। इंटरनल ऑडिट होता है नॉर्मल कोर्स में, 1 साल में एक बार हो ही जाता है। अगर ब्रांच थोड़ी सी अच्छी साइज की है तो कॉन्करेंट ऑडिट भी होगा। So the internal audit report, the concrete audit report, and there are many other audits like a system audit maybe, or a credit audit, or there may be other audits. There may be stock audit for the borrowers. There are many audits in the bank. We are not the only auditors there. Okay, तो आप ये audit report obtain कर लीजिए। ठीक है, easy बात क्या है इसमें, आसान क्या है कि आज की डेट में जो most of these audits are happening on a online basis. So either the bank have procured certain softwares जिसके अंदर ये audit हो रहा है, या banks insist on getting a soft copy also along with a hard copy if required. So these soft copies are already available with the branch manager. You can easily ask him to provide these copies of these audit reports. Now,
These audit reports would help you in basically doing your first step, which is basically to understand the branch, the auditing. So the first step in any audit is to understand your auditing. So these audit reports would help you in understanding your auditing. One, you will understand the composition of the branch, what kind of advances the branch has, what kind of a deposit it has, whether it is a deposit heavy branch or it is a advances heavy branch, or what kind of activities your branch is doing, whether it is a forex branch, whether it is doing some government business. So all these things you will get to know. One. Secondly, you will get an idea about the critical areas in the branch. What can be the problems in the branch? So these reports would highlight the critical areas where we need to spend time as an auditor, critical areas where you might have found discrepancies. Those auditors might have found discrepancies which has an impact on your audit also. So you can note down those discrepancies, and when you go and visit the branch practically, you can actually verify those discrepancies, whether they have been rectified or they still have any impact on your audit. So this becomes a very important area. तो जब आप ब्रांच में एंटर करेंगे सर, तो आपको एक्चुअली में ब्रांच के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, जो अदरवाइज अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करके जा रहे तो आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्या हेल्प मिलती है सर, कि ये एक्टिविटी इन एनी केस आपको करनी है, क्योंकि LFAR भी आपसे स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछता है। अगर वो अब तो पूरी एक लिस्ट ऑफ ऑडिट्स देता है कि क्या ये ऑडिट हुआ तो क्या आपने वो ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर लिया इनकी ऑडिट रिपोर्ट। तो बेसिकली ये एक्टिविटी तो आपको करनी ही करनी है। व्हाई वेस्ट टाइम ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी व्हेन यू आर देयर इन द ब्रांच, इजंट इट? वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो एक्टिविटी मैं अपने ऑफिस में आराम से अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता हूँ, व्हाई टू वेस्ट टाइम, whatever time we are going to spend in the branch, why to waste on such an activity which could have easily be done at our office? So this becomes important. दूसरा क्या करना है सर, हमें प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं कि जब हम एक स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट की बात करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट एडवांसेस। ऑफ कोर्स ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ एनी बैंक, advances would constitute one of the major portion of the assets of the branch. But of course, it is not only about the advance portion. It is about all other items also which may be there in the balance sheet. It is about P&L account also, and we give a report on the trueness and fairness of the accounts also. So we have to actually do some kind of analytical procedures to decide कि हम क्या-क्या areas को check करें. Because again, because of the lack of time, we are not in a position to do 100% verification of all items of balance sheet and P&L account. So what we can do, and this activity we do practically in every kind of audit which we do, which is basically we compare the figures of the current year with the figures of the previous year, try to find out any unusual deviations, any variations which are not explainable, कि भाई हमारा से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 10%, ठीक है, तो मेरे कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे जो डायरेक्टली रिलेट करते होंगे मेरे रेवेन्यू से, तो क्या उसके अंदर कोई अनयूजुअल वेरिएशन हुआ है, अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, दैट वी ट्राई एंड वेरीफाई. So this activity we need to do in the banks also. Why? Because again, हमारे पास there is a lack of time. We would not be able to do everything in the time which is allocated to us, even if we want to do that. So this analysis would actually help us in understanding any specific areas where we need to keep our focus on, where there is a likelihood that there is an error, and where we can actually verify and find out whether there was any error and NOC needs to be provided. And apart from it, not only compare the last year balance sheet, also compare, because banks generally would have results, unaudited results published on every quarter end. So you have 3 quarters balance sheet also which is available with the bank. So you can actually compare that report with the balance sheet as of 31st March also, and you will get basically a trend analysis कि क्या ट्रेंड है इनकम में और एक्सपेंडिचर्स में. That's what this would help you in understanding any area which where you need to again basically check and result into checking, putting your time basically to understand it. ठीक है, so this is something which is very critical. Third, एक एक्टिविटी और हमें को करने की जरूरत, and what is that activity basically? सर अगर मैं एडवांसेस की बात करूं, which is again as I said it is one of the most critical areas for which we are going to do the audit. So a large portion of our time will be spent on basically talking about advances and trying to analyze advances and trying to basically check on advances in any audit in case of banks.
Now what is critical need to understand basically is, सर पहले अगर मैं बात करूं और हम में से बहुत सारे लोग सीनियर्स होंगे जिन्होंने काफी साल से ऑडिट कर रहे होंगे, तो अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, व्हाट वाज द पोजीशन इन बैंक्स इन अकाउंट्स, बैंक्स में कि जब हम ऑडिट करते थे तो एनपीए क्लासिफिकेशन करना, एनपीए आइडेंटिफाई करना वाज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम आप स्पेंड करते थे तो एनपीए आसानी से मिल जाते थे। वो एनपीएस होते थे जो क्लियरली एनपीएस हैं, जो एज पर दी नॉर्म्स बैंक को खुद ही एनपीए कर देने चाहिए थे, और बैंक नहीं करते थे, और वो हमारे को मिल जाते तो फिर हमारे को उसकी एमओसीज डालनी पड़ती है, राइट। आज की डेट में द कंप्लायंस हैज गॉन अप क्वाइट अ लॉट इन केस ऑफ बैंक्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर देयर इज अ क्लियर कट एनपीए, the bank would have already declared that account as an NPA. And we'll discuss about a process called as automation of downgradation and upgradation of accounts. There was a circular which came last year, and which the compliance that they have, the banks have given a compliance report this year that they have complied with their circular. We'll discuss about it. So there is a system of automation of classification of NPAs which is there in the banks, which the bank is saying is now operating independently and is able to detect all NPAs. Now the critical point here is, कि जो एनपी आइडेंटिफिकेशन है बाय सिस्टम, ठीक है, वन द बैंक्स हैव बीन प्रोएक्टिव, हैव बीन डिक्लेयर्ड एनपीएस wherever there is a clear cut case of an NPA, right? Secondly, the system have been used for the purpose of identification of NPAs, right? Now what is happening here is, the system is basically what we call it is as GIGO, garbage in, garbage out. So any computerized system would be that if you give the computer system the wrong information, wrong parameters, then it is likely to give you a wrong result, right? So it becomes important in any audit where we are using computers and we are using computer-based controls for the purpose of verifying whether the data input, whether the data feeded into the system is correct. So similarly, in case of banks, the master data of advances account becomes critical. So if you create a wrong master data, it may be deliberate or it may be by mistake also, then the result which would be given by these automated systems would be basically wrong because the data itself is wrong. I'll tell you an example, what I'm basically referring to. So basically, suppose there is an account where it was given, then there was an installment EMI of rupees 10,000 which was to be basically recovered from the account every month. But when feeding that data into the system, so when you create that master data for that borrower, you tell the system from what date the loan would be granted, when it would be dispersed, when it would be basically the installment would start, what would be the rate of interest, what would be the total number of installment, whether there is any moratorium, and you would also tell what is the expected EMI. So what kind of EMI is required to pay maybe every month, right? Now, suppose the EMI was to be, the charge was rupees 10,000, but by mistake, while inputting the data into the system, we have put a entry of only 1,000 rupees. So rather than 10,000, we have put in the master data 1,000. Now for the system, it means that if 1,000 rupees are received every month, then this the account is running regular. There is no discrepancy. There is no overdue in the account. But actually, what is happening there is that if the customer is only paying 1,000 in place of 10,000 rupees, then the account should be classified as an NPA after a certain time gap, which we are going to discuss. Okay, so how do we verify any such cases of errors in master data? This is one. And secondly, this becomes also important because last year we saw a lot of mergers happening in case of banks. So when database of banks merge, generally what we have seen is that even in spite of the best efforts of the all concerned, the databases sometimes when they get merged, there are a lot of discrepancies which arise because of incorrect merger basically, right? Now this would result into incorrect results from the bank also, from the that computerized system also. So this becomes very critical activity. So what do we do to basically check on this is,
we ask the bank to provide us basically 2-3 reports which we can actually verify at our office itself. The first one is we ask for the balance file of CCODs. So when we look at the balance file, we get an idea as to how many CCOD accounts are there. Then what is the general limit in the account? What is the rate of interest? Whether any account seems to be going out of order, right? All this we are able to check. In case of TLDL, what we do, sir? So in TLDL, we expect them to give us the account number, the name of the customer, then of course the date of loan, the total amount of loan, total number of installment, and the rate of interest. Now, when we have all these four information with us, we can actually calculate that what should be the idle balance of that account as on that day. So if you have these four details, you can use a sheet called as a amortization schedule. It is very easily available. You do a Google or whatever, you will be able to get an amortization schedule. And if anybody has a good understanding of Excel, they can even create that amortization formula in the Excel itself. So basically what you will be doing is you will be calculating what should be the balance in the account if these parameters are correct. So the total number of installments and the amount and basically the rate of interest is known to us, then we would be able to calculate what is the EMI and what should be the outstanding balance as on date. Now, in a lot of cases, you will find that there is a difference between the balance as it should be by calculating that amortization schedule, or as it is actually appearing in the list. So if there is a difference of some minor amount, maybe one installment, then maybe you can avoid. But if the difference is much larger, then you need to go, when you go to the branch, visit and do your audit. Maybe you need to get the original audit, the documents, the original file, check the data from there and ensure either there would be an error in the master data creation, or basically there would be some kind of window dressing which the bank might have done by doing a restructuring or something, which you need to verify. Sir, we have found out cases where suppose the loan was given in the year 2012 and the loan was for say 6 years, and even in 2020 the loan was still outstanding. It should have been closed by 2018, but in 2021 the account had balance and the account was still being shown as a standard, even in spite of the fact that in 2018 itself the loan account should have been fully settled and the account should have been closed, right? So these kind of issues becomes important, and through this process you will be able to verify them. And when you actually visit the branch, you will be able to see the document and decide accordingly how it needs to be taken care in your audit report. Okay? So do you feel we would be able to do all these three activities which I told you? One is basically the balance sheet and P&L for the last 3 quarters and the last year compared with the figures of the current year. Secondly is this advanced verification which we talked about, and third is basically the audit reports which we need to obtain and verify. Can we do all these three activities before we visit the branch? Anybody? Right. So Priyadarshan is saying yes, definitely. So I'm sure he is not the only one who is convinced with my arguments there, and others also feel that they can actually do this activity. Okay. So once we have done this activity, we are basically prepared to start off with our audit. Once we are able to understand the branch, the basic profile of the branch, what kind of issues are there in the branch, what kind of files, etc. we need to verify, sir, and basically what kind of sampling we are looking at taking. Now the samples might change during the course of the audit depending upon your audit findings, but a preliminary sample would be ready with you. One, like your LFAR asks you to take a sample of 10% or 10 crore, whichever is less. So you, by looking at the document itself, that list itself of loans,
You will know how many cases are need to be compulsorily taken, and then of course what other samples you are willing to take. So a preliminary sample would also be ready, right? So as Priyadarshini's case saying, we will get an idea of the branch even before we enter the branch visit. Very good, sir. So this is what I expect you to do, sir. So one, it helps you in saving your time when you are there in the branch, because some activities which you otherwise would have done sitting in the branch, you have already done. So basically, as you said now, so when we start running, we start with a slow pace, then we pick up pace. So basically, I'm making you ready to basically pick up pace. सर मोहित जी, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पीपीटी मूव नहीं हो रही है सर आगे पीछे, एक बार आप चेक करेंगे अगर आपने मूव किया। हाँ जी, हाँ जी। अब मूव कर लिया सर? Right now sir, it's moving sir. Thank you sir. Okay. Right. So this we have already spoken about, sir. Comparison of current year figures with the previous year figures and quarters to check for variation. So basically, it is nothing what we refer to as analytical procedures under SA 540. Then we talked about the third point: verify corporate audit reports, the internal inspection reports, etc. Of course, for LFAR, and to understand any critical points which we need to verify from our audit point of view. Then third, what we need to do basically. So now, what kind of usage we can do of already some databases, some reports which are already there in the bank. So it is not only that we have to create everything on our own, try to find out all those reports. So one is, of course, there are certain reports which the bank management have generated for their some internal auditors or some concurrent auditors or for the branch manager or some staff to verify. So these reports are generally available on some site on the internet. Please refer to these sites. Okay? Try and find out that site on the internet where these reports are loaded. A lot of those reports are very useful for us as an auditor and can be actually utilized by us while doing our audits. Okay? So these reports are very critical. Then in case your branch manager, the incumbent of the branch has changed during the course of this financial year, so these branch managers, when they change, they prepare a handing over charge report. Basically, what is that report? This is a report where the incoming branch manager does kind of a small audit of the branch, tries to find out any discrepancies in the operation of the branch, and those discrepancies is mentioned in this charge taking over report. The reason is he's basically informing his senior management कि भाई ये सब issues जो हैं ये तो मेरे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस डेट को एग्जिस्ट करते थे, प्री एग्जिस्टिंग थे, ठीक है, तो इनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बेसिकली आई विल टेक डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम, बट दीज आर प्री एग्जिस्टिंग. So basically he's trying to bring to the notice of the senior management these kind of issues. You can actually use that report basically because उसमें खुद ही उसने issues point out किए हुए हैं, तो ये basically issues को आप use कर सकते हैं for the purpose of your audit. इसके अलावा सर कुछ डाटाबेसेज हैं जैसे क्रिलिक, CRILC, ठीक है. अब ये जो क्रिलिक का डाटाबेस है ये बेसिकली एप्लीकेबल है यहाँ पे जो एडवांस है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से नॉर्थ की है, ठीक है, तो बड़े एडवांसेस के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है. और इसके अंदर क्या होता है कि अगर उसने मल्टीपल बैंकिंग की हुई है, मल्टीपल बैंक के साथ वो ऑपरेट कर रहा है कस्टमर, तो हर एक बैंक इसमें अपना डाटा अपडेट करता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है RBI की, and we can obtain this report of CRILC for the purpose of our audit. ठीक है, ऐसे एक सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री है CFR, उसको आप यूज कर सकते हैं. आइडिया क्या है सर कि अगर हमने इसे CRILC को रेफर किया, हमें पता चल गया कि ये हो सकता है मेरी ब्रांच के अंदर तो कस्टमर का अकाउंट ठीक लग रहा हो पर किसी और बैंक ने उसको NPA डिक्लेयर किया हो, या किसी और बैंक में वो SMA की रिपोर्ट में आ रहा हो, स्पेशल मेंशन अकाउंट हो, या एक कंसेप्ट आता है जो आपने लास्ट ईयर डेफिनेटली देखा होगा हमारी रिवाइज LFAR के अंदर फॉर्मेट में था, रेड फ्लैग अकाउंट्स का. तो रेड फ्लैग अकाउंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो अकाउंट्स हैं जो बेसिकली जिसके अंदर कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स नजर आए हैं, कुछ एरर्स नजर आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई है बैंक को, तो वो प्रॉब्लम जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा क्या वो एक्चुअली में कोई फ्रॉड है या कोई मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी थी जो बैंक कैन करेक्ट और द कस्टमर कैन करेक्ट और द बोरोवर कैन करेक्ट, तो वो थी.
तो इतने in the meantime the bank needs to mark that account as a red flag account and report it under CRLIC. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस क्या है सर इस बात से कि बेसिकली जो ये डाटा बेसिस हैं जहाँ पे जो एप्लीकेबल है 5 करोड़ एंड अबव का, उसके अंदर अगर आप वो रिपोर्ट ऑब्टेन कर लेते हैं, हो सकता है किसी और बैंक में अगर वो एनपीए है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी एनपीए कर दूं ऑफ कोर्स, बट उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स है जिसको आपको कुछ क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। हो सकता है कि अगर वो अकाउंट किसी और बैंक में एनपीए हो गया हो तो आपको अपने बैंक में भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जी वो किसी तरीके से उसको अकाउंट को एनपीए से बचाया जा रहा हो कोई क्रेडिट फैसिलिटीज देके या किसी और तरीके से। So it will give an idea about the basically the background of that customer. So would really help you in doing a better job, right? इसके अलावा सर NPA identification becomes something which is very critical. One activity I told you wherein you need to verify whether the database has been correctly updated, the master data has been correctly updated. दूसरा आता है सर कि हम कैसे वेरीफाई करें NPAs को। Now again the same issue का arises कि एक तरीका तो ये है सर आई डू 100% चेक कि पहले अकाउंट से शुरू किया और सपोज करो ब्रांच के अंदर 2000 अकाउंट है मैंने सारे चेक कर दिए। दिस इज वन वे। जनरली दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम व्हिच वी हैव। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कोई रैंडम बेसिस पे चेक करना शुरू कर दूं कि पहला अकाउंट किया फिर तीसरा अकाउंट किया फिर पांचवा अकाउंट किया, कुछ ऐसा करूं। That is also not a very scientific method and of course lapses can be there in this method also. Now, one of the ways through which you can actually do is there is a report which gets generated every end of the month. Abhi to the frequency will increase with the guidelines given by the Reserve Bank of India. We'll understand what are those guidelines also. And basically, उसमें मेरी अब कहना ये है कि SMA की रिपोर्ट आती है. What is SMA basically? Is basically an account which is a standard account. SMA is not NPA. SMA is a standard account, but it is running irregular. It is not running as per the agreement between the bank and the borrower. So there is some discrepancy in terms of either the installments not being paid or the balance remaining in excess of the sanction limit drawing power, or there are no credits in the account, whatever ways, but there are some discrepancies in the account. Okay, these discrepancies as per the bank does not make them a NPA. But when you obtain this report as on 31st March, you actually verify that report. In certain cases, the auditor's opinion may be different. That you might feel that the account needs to be classified as an NPA. So in those cases, you can actually go ahead and classify the account as an NPA account. Okay, so this is important. Now another thing which we need to keep in mind, sir, is that we all know that what happens is that statutory audit is going to happen is not something which is not known to the branch management. They actually know that, right? And they also know the time when the statutory auditor can be expected. Now what happens is the branch management in every bank, what they would do is they would start following up with those customers which are basically in the SMA category, asking them basically to do to submit to do the necessary correction in their account so that the account does not slip into the NPA category. तो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही तो वो फॉलो अप करेंगे कि भाई आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम नहीं पे करिए। अगर उसके अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बट कोई क्रेडिट्स नहीं आ रहे तो इंसिस्ट किया जाएगा कि भैया आप कुछ क्रेडिट्स दिए अकाउंट के अंदर। तो वॉट एवर इट इज देयर। नाउ इफ देयर इज एन एक्चुअल रिकवरी इन द अकाउंट, भाई आपने फॉलो अप किया ब्रांच मैनेजर ने या ब्रांच क्रेडिट मैनेजर ने और उस फॉलोअप की वजह से देयर आर सम क्रेडिट्स इन द अकाउंट, आई हैव नो इश्यूज विद दैट सर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द रोल ऑफ द ब्रांच मैनेजर टू फॉलो अप विद द कस्टमर्स एंड इफ ही इज लाइक डूइंग इट देयर इज नो इशू। मुझे प्रॉब्लम भी उस बात से है कि एक्चुअली में तो रिकवरी नहीं हुई बट टू सेव द अकाउंट फ्रॉम बिकमिंग एन एनपीए द ब्रांच मैनेजमेंट कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करता है व्हिच आर नॉट परमिसिबल, वी ऑल नो दैट, बट व्हिच आर समटाइम्स दैट टू समहाउ hide an NPA, and so that the auditor is not able to find that NPA, is not able to provide a NOC for classification of that account as an NPA. Now, how do we verify such activities? So one of the ways through which we have been doing it, sir, I can tell you, is that this list of SMA which we have obtained, which we have discussed, तो ये हम लिस्ट सिर्फ 31 मार्च की नहीं लेते सर, we take it at end February end, January end, December end also.
और उन रिपोर्ट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द मार्च रिपोर्ट. So we use basically a command like VLOOKUP or something to basically identify any accounts which were appearing in the December report or January report or Feb report, but which is not appearing in the March report. So basically that analysis would give me few accounts which were irregular earlier, but which has been regularized as of 31st March. We need to verify how the account has been regularized. If it is from genuine source of deposit of money, then I have no problem, sir. But in certain cases, we have found out that the accounts have been manipulated. Some manipulated entries have been done to make the account, save the account from becoming an NPA. Like for example, in one of the cases, we saw that there was an account, rather there was a CC account, there was a HL limit also, and that account was classified to be classified as an NPA, but which the branch management has not done. Now, to save the account from becoming an NPA, as on 31st March, what they did, they pass a entry, credit entry in the account of 10 lakh rupees, and there was an entry for check purchase. Now, through this identification, which I have told you, we were able to identify this account. When we went into deep, we find out that there is a check purchase. Now, the process was such that the branch was scanning the check, preparing a list of all outward clearing, and sending it to the centralized department for basically completion of the clearing process. Now, we asked them to provide us the list of all checks which they have sent to the centralized processing center. When we checked in that list on 30th and 31st, there was no entry for a check purchase. So that check which was purchased, which was stated to be purchased, it was never sent for clearing even. Now, this kind of an activity which we have found out, this you will be able to verify only and only if you are actually able to reduce the list to like 20 or 30 or 40 accounts at the most. If you want to do this in a detailed examination, it cannot be done on all accounts, and this can only be done in very few accounts. So through this process, you will be able to identify such accounts and then take appropriate actions. So this is important. Okay. Now, inter-office accounts. Now, inter-office, if you ask any branch, they would say, sir, inter-office recon hamari activity nahi hai, it is done by some other department. Of course, I understand, sir, inter-office reconciliation करने की जिम्मेदारी branch की नहीं है. But जब वो reconciliation होती है, अगर उसमें कोई entries हैं जो branch ने miss कर दी हैं, तो that inter-office reconciliation center would send the details to the branch concerned and ask them to put the entries in the CBS system. We need to verify the report as on 31st March and check for any entries which needs to be taken care by us while doing our audit. Okay. इसके अलावा suspense and sundries. Now, suspense and sundries is a very unique account. It does not belong to any customer one. Secondly, तो इसमें आप कोई भी एंट्री करें, कुछ भी आप एंट्री डेबिट करें, क्रेडिट करें, कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली, because basically it is not belonging to a customer. It is different to a regular customer account. Okay? I can tell you, sir, I have been doing bank audit for so many years, and what we have seen is a lot of times we have found out frauds where these office accounts were misused for the purpose of doing the fraud, right? So it becomes important because a lot of times we have also seen account were saved from becoming an NPA by misuse of these office accounts. Okay, so कोई credit दे दिया और as on 30th March और वो 4-5 तारीख को रिवर्स कर दिया क्रेडिट. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं जो कई बार ब्रांच मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली सस्पेंस और सन्ड्रीज के अंदर दो चीजें अपने को देखनी है. एक तो जो उसकी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं वो हमें वेरीफाई करनी है एज टू द रीजन व्हाई दे शुड बी आउटस्टैंडिंग. एक एग्जांपल देता हूँ सर. अगेन एक हमने ब्रांच में ऑडिट किया, देयर वाज अ एंट्री व्हिच वाज 3 ईयर ओल्ड और उस एंट्री के अंदर 5 लाख रुपए की एंट्री थी. उसने बताया कि सर ये क्या हुआ था हमारे केस में कि एक फ्रॉड हुआ था ब्रांच के अंदर करीबन 3 साल पहले. The customer account was compensated. The customer went into banking ombudsman. The customer account was compensated. He did not bear the loss. So what they did, entry was debit suspense account, credit customer account. Now this
entry which is been shown as an asset, which is part of the suspense account, whether this is actually an asset. So it is not an asset to my mind till it is actually recoverable from somebody, and the bank provides me evidence that it is recoverable from Mr. X, and there is a reasonable certainty of me recovering that amount. Otherwise, it needs to be provided for completely. Similar is in case of other entries which are outstanding. So please look at the nature of the entries which are outstanding, and also verify basically the nature of entry, the kind of activity which the branch is doing in these office accounts, especially in the last few days, especially in the last few weeks of March. Please verify the kind of activities there. Okay, so this becomes very critical. Okay. Now, the next area which we need to verify, sir, and this is something which I think everybody of us should be doing, is there would be a list of NPAs as on 31st March 2021. There would be a list of, and there would be a list of NPAs as on 31st March 2022. Please compare the previous year list of NPAs and the current year list of NPAs. When you do that verification, you will find there are three kind of accounts in that table. You will be basically able to segregate the cases into three cases. One is which were an NPA last year, which are an NPA in this year, right? So ये तो वो accounts है जो पिछले साल भी NPA थे और इस साल भी NPA है. कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जो पिछले साल एनपीए नहीं थे और इस साल एनपीए है, यानी फ्रेशली आइडेंटिफाइड एनपीएस, और कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जो पिछले साल एनपीए थे और इस साल एनपीए नहीं है. ठीक है. सो अब हम ये तीन टेबल बना लें. पहली टेबल जो पिछले साल भी एनपीए था और इस साल भी एनपीए, उसमें क्या देखना है सर, तो ये बताएगा मेरे को. व्हाट वी नीड टू वेरीफाई फॉर केसेस व्हिच वर पिछले साल लास्ट ईयर आल्सो एन एनपीए एंड दिस ईयर आल्सो दे आर एन एनपीए. So Aman ji is saying classification. तो सर सबसे पहले तो मैं देखूंगा सर डेट ऑफ एनपीए क्या है. That is very important. I have seen cases सर जो एक अकाउंट था एनपीए लास्ट ईयर में 30 सितंबर 2020 उसकी डेट ऑफ एनपीए थी है, और नेक्स्ट ईयर में गया तो उसकी डेट ऑफ एनपीए बन गई 30 सितंबर 2021. So it becomes very important. And of course, as a Shubham Mishra is saying, the staging of NPA. So the what would happen in that case is, because the date of NPA you are changing, the account which was the substandard last year would continue as a substandard this year itself. Otherwise, it should have slipped into the doubtful category. So this is one. Secondly, sir, अगर कोई NPA account में कोई recovery आती है, तो आपको internal policy of the bank देखनी पड़ेगी कि वो recovery को कहाँ पे adjust करना. कुछ जनरली बैंक्स के अंदर पॉलिसी होती है कि पहले हम अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट को रिकवर करेंगे और फिर बचा हुआ बैलेंस कुछ रह गया तो उसको प्रिंसिपल से एडजस्ट करेंगे. आप बहुत बार देखेंगे सर कि ऐसा होगा कि जी वो उन्हें पैसा आया तो इंटरेस्ट डेबिट नहीं होता, ये हमें पता है. अकाउंट में अगर वो एनपीए बन जाता है टिल इट इज रियलाइज्ड, तो वो क्या करते हैं कि रेदर देन रिकवरिंग द अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, वो जो प्रिंसिपल बैलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं एनपीए को. तो दिस वी नीड टू वेरीफाई दैट अगर कोई रिकवरी आई है मेरे एनपीए अकाउंट में तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, जो अकाउंट पिछले साल एनपीए नहीं थे और इस साल एनपीए की लिस्ट में है, ठीक है, तो फ्रेशली आइडेंटिफाइड एनपीएस, उसमें क्या देखना है सर अपने को, कि तो बैंक ने ऑलरेडी एनपीए कर दिया, तो हमें क्या देखने की जरूरत है एज एन ऑडिटर में, या कुछ जरूरत नहीं है, बताइए सर. कुछ देखने की जरूरत है कि नहीं. क्विक मोर्टालिटी, वेरी गुड सर. पीपीजी, वेरी गुड. क्विक मोर्टालिटी है क्या, तो अगेन आपका एलएफआर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है रिलेशन टू क्विक मोर्टालिटी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोई क्विक मोर्टालिटी के केसेस हैं. और ऑफ कोर्स क्विक मोर्टालिटी के अंदर फिर कहीं ना कहीं देयर इज अ एक्टिविटी व्हिच द बैंक हैज टू डू इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड एनी स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, तो वो आपको वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी. डेट ऑफ एनपीए, अगेन वेरी गुड सर. तो प्रियदर्शनी जी सेइंग डेट ऑफ एनपीए को बैंक ने एक डेट ऑफ एनपीए डाली हुई है उसमें,
कई बार हम देखते हैं सर कि डेट ऑफ एनपीए बैंक इनकरेक्ट लेता है, या तो वो एक्टिविटी ब्रांच मंथ एंड पे करता है या क्वार्टर एंड पे करता है, बट वो इनकरेक्टली लेता है। तो हमारे को उन केसेस को वेरीफाई करना है और देखना है कि वो करेक्ट डेट ऑफ एनपीए उसने ली है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड सर। एक पॉइंट और रह गया सर, कौन बताएगा मेरे को? So हमारा इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, बेसिकली व्हाट इट सेज इज कि अगर कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है तो देट इट बिकम्स एन एनपीए, उसके बाद तो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट डेबिट ही नहीं होगा टिल इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। दिस इज वन। बट अगर कोई इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिट हो चुका था बिफोर द डेट ऑफ एनपीए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 15 सितंबर 2021 को एक अकाउंट एनपीए हुआ, तो 15 सितंबर के बाद तो कोई इंटरेस्ट डेबिट किया ही नहीं जाएगा इस अकाउंट को अनलेस अंटिल इट इज रियलाइज्ड। पर 15 सितंबर 2021 से पहले तो इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर हो रहा था बैंक, तो वो इंटरेस्ट जो अकाउंट फॉर हो चुका था बट विच इज नॉट रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड जो था, उसको भी आपको डी रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वेरीफाई। तो जहां तक मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, डेट ऑफ एनपीए के बाद इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करना, जनरली बैंक्स आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, तो बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट एप्लीकेशन बंद हो जाती है जैसे ही आप अकाउंट को एनपीए मार्क करते हैं। पर जो ये डी रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो पुराना इंटरेस्ट डी रिकॉग्नाइज करना है, ये एक्टिविटी कई बार हमने देखी है कि प्रॉपरली नहीं होती बैंक। तो दिस वी नीड टू वेरीफाई एज अ ऑडिटर। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हुआ 15 सितंबर 2021 को, तो जो 15 सितंबर के बाद तो इंटरेस्ट एप्लीकेशन बंद अनलेस अंटिल इट इज रियलाइज्ड, और 15 सितंबर से पहले जो इंटरेस्ट लग चुका, ठीक है, और जिसको मेरे को डी रिकॉग्नाइज करना है, तो मुझे 1 अप्रैल 2021 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ही चेक करना है, या मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी जा सकता हूँ, 2020-21 में भी जा सकता हूँ, या उससे पीछे भी जा सकता हूँ, उसे 1920 में भी जा सकता हूँ। कौन बताएगा मेरे को इसके बारे में? बताइए सर, कितना पीछे तक मैं जा सकता हूँ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ इनकम? हाँ जी सर, आई एम वेटिंग। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं सर, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, टू शेयर अवर व्यूज। तो गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, तो प्लीज शेयर। क्या लगता है सर, सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर को देखना है, या उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर को भी देख सकते हैं, या उससे भी पिछले फाइनेंशियल ईयर को भी देख सकते हैं? तो अमन जी ने कहा ओनली करंट ईयर, भाई 1 अप्रैल 2021 से ही देखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे पिछले साल की तो मेरी पीएनएल क्लोज हो चुका है, तो उसको मैं कैसे देखूंगा, वो तो ऑलरेडी मेरी इनकम में जा चुका है, क्लोज हो चुका है, राइट। दीप्ति जी से फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए, हम डेट ऑफ एनपीए के बाद तो लगना ही नहीं, पर ये तो हम बात कर रहे हैं जो डेट ऑफ एनपीए से पहले ही इंटरेस्ट लग चुका था एक्रूअल बेसिस पे, उसको डी रिकॉग्निशन करना है इफ इट इज नॉट रियलाइज्ड। तो राजेश रानी is saying only current. Sir, if you look at the RBI guidelines, it does not talk very good, sir. Priyadarshini ji from the inception of the loan. So basically, if you look at the RBI guidelines, it says that the deed recognition can happen from the day the loan was disbursed. So they do not provide a timeline. It can be the current financial year, it can be a previous financial year, it can be previous financial years also. Now, if we talk about just to understand it, an example of an agriculture advance. So it may have become an NPA after 2 years or 3 years, whatever. So sometimes you have to reverse interest debited during the last 3 years also. So this is very important. This we need to keep in mind. Okay. Now, a very logical question which might arise in the mind of some of the people here, which is कि सपोज कीजिए मैंने 15 सितंबर 2021 को एक लोन को एनपीए किया, बैंक ने किया, जब मैंने उसका अनरियलाइज इंटरेस्ट चेक किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि 1 अप्रैल 2021 से तो कोई रियलाइजेशन थी ही नहीं, तो इस साल का तो पूरा इंटरेस्ट मेरा रिवर्स हो रहा था, पर कुछ पोर्शन पिछले साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का भी रिवर्स होने की जरूरत थी।
तो जो मैं इंटरेस्ट रिवर्स करूंगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2020-21, वेदर इट वुड अमाउंट टू अ प्रायर पीरियड आइटम्स, क्या ये प्रायर पीरियड एक्सपेंस हो जाएगा? बताइए सर। बताइए बताइए सर। Whether it would amount to a prior period item, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर। यस या नो? आपको सर मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? सर यस या नो, इसके बिना आगे नहीं चलेंगे हम सर। I need a yes or a no. So Priyadarshini ji is saying yes, it would amount to a prior period item. Anybody who feels it is not a prior period item? Okay, so just to understand it, sir, why I am raising this question, what is a prior period item? Look at AS5. So AS5 says that a prior period item is basically, I'm not saying what is the technical language there. It is basically an entry which is arriving in the current financial year due to any errors or omission made in the previous financial year. So in our example, if the income was taken on accrual basis and the account was standard, was an error made in the last financial year? There was no error, sir. The reason is, in case of a standard account, the income is taken on the accrual basis of accounting. But our policy demands that in case an account becomes an NPA, then there is a derecognition. So derecognition in this year does not result into we declaring that there was an error or omission made in the last financial year. Okay, so it is not a prior period item, right? Is it clear, sir? Am I clear, sir? Whatever I am sharing with you, are you able to understand? Okay, great. Just to support your view, sir, Priyadarshini ji, suppose आपने date of NPA verify किया and somehow you decide that the account was to be classified as NPA in the financial year 2021 itself, and you change the date of NPA to 2020-21, then in that case any interest reverse of the last financial years could become a prior period item, because then there would be an error or omission made by the bank in not classifying the account as an NPA in the last financial year. So this is very important. Now the second process which we need to verify. So accounts which were NPA last year but which have which are not appearing in the list of NPAs in the current financial year. What we need to verify in that? What can be the reason for? Can you please explain the calculation of date of NPA of an agricultural loan KCC with an example? Sir, I was not given the duty to speak about IRAC advances. Rather, Ajay ji was speaking on it, and I know he is a wonderful faculty. But still, if you're asking, I spent maybe another 5 minutes after I've completed this effective strategies which I want to share with you. I'll definitely spend 5 minutes of our time to understand how NPA is verified in case of an agriculture. Okay, sir. Okay, so last year NPA, this year it is not an NPA. What can be the reason? How can an account which was last year an NPA this year it may not be an NPA? What can be the reason for it? Recovery, of course. So recovery is resulting into either upgradation of the account into standard category. So NPAs are ROB standard बन गया, or recovery resulting into closure of the account itself. उसने पूरा ही पैसा जमा कर दिया और account को close down कर दिया. या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि उसने कोई सेटलमेंट कर लिया बैंक के साथ, वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, और जो भी सेटलमेंट की टर्म्स के हिसाब से उसने पेमेंट कर दी और अकाउंट को क्लोज डाउन.
तीनों को ये आपको वेरीफाई करना है। वन टाइम सेटलमेंट अगेन LFR आस्क फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट, एंड अदरवाइज आल्सो यू नीड टू वेरीफाई कि भाई वन टाइम सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस की उसको कंप्लाई करके ही अकाउंट को क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है कि वन टाइम सेटलमेंट की कंडीशन ये थी कि भाई आप 70% पेमेंट करोगे और कस्टमर ने सिर्फ 50% पेमेंट की और बैंक ने ब्रांच ने फिर भी अकाउंट को क्लोज डाउन कर दिया, राइट ऑफ कर दिया बैलेंस। तो दैट यू नीड टू वेरीफाई। दूसरा आता है सर कि अकाउंट को स्टैंडर्ड कर। तो स्टैंडर्ड के लिए हमारे को एक बड़ी छोटी सी बात समझनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। तो पहला एग्जांपल ये है कि सर एक अकाउंट था जो एनपीए हुआ लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है, 31 मार्च 2021 को से उस अकाउंट के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू थी, ठीक है, अकाउंट एनपीए था। इस ईयर 31 मार्च 2022 को ब्रांच मैनेजर वांट्स टू अपग्रेड द अकाउंट। अब उसका रीजन वो क्या दे रहा है कि सर उसने कस्टमर ने क्या किया है कि जनवरी के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट जमा की पिछले साल की, फरवरी के अंदर उसने 6 इंस्टॉलमेंट जमा करी इस साल की, और मार्च के अंदर उसने 5 इंस्टॉलमेंट और जमा कर दी इस साल की। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ सर कि अब कस्टमर की सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू रह गई है, ठीक है, और सारी इंस्टॉलमेंट उसने जमा कर दी। मतलब इस महीने, इस साल के अंदर उसके अंदर 4 पिछले साल की और 11 इस साल की, 15 इंस्टॉलमेंट जमा कर दी। नाउ ही वांट्स टू अपग्रेड द अकाउंट इनटू स्टैंडर्ड कैटेगरी। ही सेइंग सर एनपीए के लिए 90 डेज नॉर्म्स है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 90 डेज नॉर्म्स मीट नहीं होते, तो इसलिए अकाउंट को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ टू स्टैंडर्ड। इज ही राइट? कैन ही डू सो? नो। सो प्रियदर्शनी जी सेइंग नो। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आरबीआई कहता है कहीं पे इजी अगर कोई अकाउंट को आपको डाउनग्रेड करना है, एनपीए करना है, तो देयर आर 90 डेज नॉर्म्स, ठीक है। But once an account has slipped into NPA category, if you want to upgrade the account, then it can only be done when on the date when you want to upgrade, there is no overdues, there is nil overdues, ठीक है, 1 रुपए भी overdue नहीं होना चाहिए on the date you want to upgrade the account, ठीक है सर। So this is very important. You need to verify that wherever there has been an upgradation, whether they have actually followed the principle given by the Reserve Bank of India. Right? Next, आपने right. So प्रियदर्शनी जी ने restructuring की कुछ guidelines लेके आए हैं. So in case the account was restructured, then there are 2 concepts which they have given now. One is which is applicable to MSME loans, and one which is applicable to other loans. But basically there is some concept of a satisfactory performance during the specified period, and the specified period I'm not getting into it because I am not talking about direct advances today per se, direct norms, but there is some concept of a specified period, and in case of other than MSME there is a concept of a monitoring period which is there, so which I'm sure Ajay ji would have shared with you, so I'm not getting to it again, okay? So this is एक लास्ट रह गया सर कि जिसमें अकाउंट में रिकवरी आ गई और अकाउंट क्लोज डाउन हो गया। सर प्लीज चेक द सोर्स ऑफ रिकवरी। आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल सर। इन वन ऑफ द केसेस, जैसे मैं ये शेयर करता हूँ, तो मैंने किसी को शेयर किया, ये बात बताई, तो उसने मेरे को फोन किया सर व्हाइल ही वाज डूइंग द ऑडिट कि सर हम एक ब्रांच में ऑडिट करने आए हैं, इट वाज अ रूरल ब्रांच। पिछले साल अकाउंट थे जो एनपीए थे वो 800 अकाउंट थे, इस बार वो अकाउंट 100 से भी कम रह गए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के कि रूरल ब्रांच में इतनी सारी रिकवरी आ रही है एनपीए अकाउंट्स। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पूछो रीजन क्या है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एनपीए अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया हो किसी एसेट रिकवरी ब्रांच वगैरह में। तो उन्होंने बताया कि सर वो एक्चुअली अकाउंट में रिकवरी आ गई है और अकाउंट क्लोज डाउन हो गया। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि सर आप प्लीज कुछ केसेस में आके चेक करिए कि ये रिकवरी जो आ रही है वो जेन्युइन सोर्स से आ रही है कि नहीं आ रही है। When they verified, sir, so they find out a very interesting scheme going on in the branch. जैसे VDS scheme होती है, ऐसी एक scheme चल रही थी branch के अंदर। So what the branch manager did was on 1st March, it created an entry. Say Ramlal account was a loan account which was in NPA category. 5 lakh was the outstanding balance. So Ramlal account credit 5 lakh rupees, suspense account debit 5 lakh.
रामलाल अकाउंट की फुल्ली रिकवरी आ गई, अकाउंट को क्लोज डाउन कर दिया। 1st March morning this entry was done. 1st March evening a reverse entry was done. Ramlal new account debit 5 lakh rupees, suspense account credit 5 lakh rupees. तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, सेम डे में जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रामलाल को 1 मार्च की सुबह भी 5 लाख देने थे, 1 मार्च की शाम को भी 5 लाख देने हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या हुई सर, बेसिकली कि रामलाल का अकाउंट जो एनपीए था वो एनपीए खत्म हो गया और एक नया अकाउंट आ गया तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में, और जिसको हो सकता है बहुत सारे ऑडिटर्स वेरीफाई भी नहीं करेंगे, भाई ये तो 1 मार्च को ही खुला है तो इसमें तो ये एनपीए हो ही नहीं सकता। ऐसा इन्होंने अराउंड 700 अकाउंट्स में कर डाला सिंगल ब्रांच। तो ये कैसे वेरीफाई करेंगे आप? Through this process itself, you will be able to identify, and of course, you will be able to check the recovery whether it is from a genuine source or not. ठीक है सर? कैपिटल एडिक्वेसी की स्टेटमेंट्स, बेसल की, तो इसमें क्या वेरीफाई करते हैं सर? कोई बताएगा मेरे को? बताइए सर, क्या वेरीफाई करते हैं? तो जनरली मैंने देखा कि जब मैं, चाहे वो फिजिकल सेमिनार हो, वर्चुअल सेमिनार हो, तो जनरली पीपल डू नॉट गिव अ रिप्लाई टू इट दिस स्टेटमेंट, और समटाइम्स दे टेल मी कि सर ये तो एक्टिविटी जो है ये तो जोनल लेवल पे होती है, हमारे ब्रांच लेवल पे कुछ देखने की जरूरत नहीं। और मैं लोगों को कहता हूँ सर ऐसा नहीं है, और ये बात इस बात से भी क्लियर होती है कि जब वो हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं, हमसे साइन ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेरी जिम्मेदारी होगी उस रिपोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको क्या देखना है बेसिकली सर, एट द मिनिमम जो आपको देखने की जरूरत है, तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे एडवांसेस की बात करूं तो एडवांसेस कुछ बकेट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, उसका टोटल आएगा, वो टोटल एटलीस्ट बैलेंस शीट के टोटल से मैच करो, ये तो मिनिमम है जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूं। दूसरा, उसके अंदर कुछ वेट्स होते हैं, आप वेट्स को छोड़ दो, आप नहीं, आपको क्लियर है, आपने नहीं गाइडलाइन से क्लियर है बेसिक की, आप उस वेट्स को छोड़ दो, तो बकेट्स है उसको करेक्टली चेक कर लो कि वो बकेट सही बनी है कि नहीं। सो बेसिकली ये एक्टिविटी बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो आप ये जो काम है सर, आप ये आपने जो ये बकेट्स का डाटा आपने वेरीफाई करना है, ये डाटा किसी मेनू ऑप्शन से जनरेट नहीं होता सीबीएस। तो सीबीएस सिस्टम को में क्या होता है सर, डाटा या तो एक मेनू ऑप्शन होती है सिस्टम के अंदर इटसेल्फ, जो पार्ट ऑफ दैट सीबीएस सिस्टम का है, वो मेनू ऑप्शन से आप जनरेट कर सकते हैं। जो मेनू ऑप्शन से जनरेट नहीं हो सकता, वो फिर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ बैकएंड में प्रोग्राम रन करना पड़ता है, और फिर वो डाटा को आपको एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है? तो ये जो डाटा है, जो बकेट्स हैं, ये किसी मेनू ऑप्शन से जनरेट नहीं होती। इसके लिए आपको जो वर्कशीट है वो ब्रांच से लेनी पड़ेगी। अब ब्रांच से आप मांगेंगे या तो वो आपको देगी या नहीं देगी। अगर नहीं देती तो प्लीज मेंशन ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट इटसेल्फ दैट द डाटा हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू यू, यू आर अनेबल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द बकेट्स, and if they provide the data, please keep that data in your audit file as part of your documentation, verify the same in some sample cases, and then decide whether the data is correct or not. Yeah, this is expected. Then legal expenses. अब legal bills में क्या है सर, एक तो रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज में हम जीएसटी में हम सोचते हैं कि जी ब्रांच लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जहां जहां पे जीएसटी की कंप्लाइंस ब्रांच लेवल पे हमें चेक करने की जरूरत है, तो वो हमें वेरीफाई करना है सर। ओके, नाउ लीगल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, इसका एक और रीजन है क्यों उसको वेरीफाई हमें करना चाहिए, कि सर एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जैसे क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट। अगर आप ब्रांच मैनेजर से पूछे सर कितने केसेस हैं, वो कहेगा सर एक भी केस नहीं। व्हेन यू लुक एट द लीगल एक्सपेंसेस व्हिच द ब्रांच हैज डन ड्यूरिंग द ईयर, टेक आउट द वाउचर, अंडरस्टैंड किस केस के लिए किया गया। अगर वो केस के अंदर बैंक इज अ डिफेंडेंट, एनी ऑफ द केस इफ द बैंक इज अ डिफेंडेंट, then you need to verify that legal file, understand what is the liability on the bank. That liability is at least a contingent liability, and in certain cases you will also find out some actual liabilities which the bank is required to pay. So a provision may be required to be made for it.
ठीक है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। रिवर्स चार्ज की बात करूं सर, Sandeep ji is asking, are there any exception to the rule NPA classification must be made borrower wise but not facility wise? So they are exceptions, sir. Will though again I was not talking about the area of ICAI, but I'll definitely take you this slide where there are exception to that rule. ठीक है, एक तो जीएसटी रिवर्स चार्ज किस किस पे लगती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज विच आर मोर इम्पोर्टेंट एट दी बैंक लेवल, goods transport agency, service for advocates, services by arbitral tribunal, recovery agent, security services, service by business facilitators. ठीक है, घोषण दिलाना अगेन एक ऐसी रिपोर्ट सर जिसके बारे में हम ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स आई आल्सो नो, एक तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आपको यस नो नॉट एप्लीकेबल करने की ऑप्शन देता है, एक्सप्लेनेशन देने की ऑप्शन नहीं देता, और दूसरा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर ये तो यूजलेस एक्सरसाइज, ठीक है सर। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कहूंगा कि जहां पे भी आप अपने सिग्नेचर लगा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूजलेस। Once a signature of a professional like a chartered accountant is placed on any document, it becomes a very important document and you need to be careful about it. दूसरी चीज सर, कि इसके लिए ना अगेन हमारा गाइडेंस नोट जो है ऑडिट ऑफ बैंक्स का, वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप इसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाइए, कवरिंग रिपोर्ट लगाइए, जिसके अंदर जहां जहां पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है आप उसको वहां पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर अगेन, क्योंकि अगर हमें अपने सिग्नेचर की वैल्यू नहीं पता ना सर, तो और किसी को वो सिग्नेचर की वैल्यू नहीं पता। एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। अब जब हम बैंक ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, पहले फिजिकली करते थे, आजकल जनरली ऑनलाइन हो चुका है ये प्रोसेस, पर एनीवेज हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एंड देन साइन। देयर इज ओनली वन डॉक्यूमेंट व्हिच वी प्रिपेयर, व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट सर, कोई बताएगा मेरे को? What is the document which we are required to prepare, sir? LFAR is one, of course. So it is basically an audit report, whether it is the long form audit report or it is Indian audit report, whatever it is, ठीक है, तो वो audit report। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर हम सबसे कम जो टाइम लगाते हैं ना उस audit report में ही लगाते हैं। कॉपी पेस्ट एक फॉर्मेट हमारे को बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है, उसी को कॉपी पेस्ट किया और उसको भेज दिया। तो सर क्या वो सही है नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। एग्जांपल ले सकते हैं, मैं किसी ब्रांच के अंदर ऑडिट कर रहा हूँ और मैंने से 20% ऑफ द एडवांसेस ऑफ द ब्रांच को डिक्लेयर कर दिया एनपी, जो ब्रांच ने नहीं करे हुए तो वो 20% और कर दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रांच अकाउंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू? तो कहीं क्या मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत है? तो ये दिस ऑल एक्टिविटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। The gist of your work and the final conclusion, this should be reflected through your audit reports. This is very important, ठीक है। आप जब ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं ना सर, तो हमारे को 2-3 एसेज हैं जिसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, हमें जरूर पढ़े हुए होने चाहिए। वन इज एसे 700 जो ऑडिट की बात करता है, ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करता है। Then 705 it talks about modification in the audit report की अगर आपको क्वालिफाइड देनी है, आपको डिस्क्लेमर देना है, आपको नेगेटिव रिपोर्ट देनी है। SS 706 it talks about emphasis of matter. Then SS 701 key audit matters, ठीक है। Then SS 720 other matters। तो ये कम से कम ऐसे हमने पढ़े होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर द बैंक ऑडिट बट फॉर ऑल अदर एरियाज, ऑल अदर केसेस वेयर वी आर डूइंग एन ऑडिट सर, ठीक है। चाहे वो कंपनी का ऑडिट हो, चाहे टैक्स ऑडिट हो, जहां पे भी मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मैंडेटरी एसेज हैं, ये हमारे को जरूर पता होना चाहिए। हमें पता चलेगा कहाँ पे हमें एम्फेसिस देना है, कहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन देनी है, कहाँ पे हमें की ऑडिट मैटर्स देना है, ये सब चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। दूसरा है सर, आपको रिपोर्टिंग देनी है, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर पीएसबी, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड दिस ईयर आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। So please refer to the technical guide or the internal financial control in case of public sector banks, whichever institute has issued. तो वो आपको हेल्प करेगा to understand what is the requirement, what we need to do.
Then consistency और reporting between various reports, it is very critical. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आपकी रिपोर्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सर, LFAR can have a reference to the main statutory audit report, but your main statutory audit report should not be referring to the LFAR. It should be independent, it should be complete, it should be to the person who is going to read it, it should make sense. Okay. Then engagement letter SA 210, this is important, you need to do it, sir. The guidance note of the audit of banks which our institute has given provides you a format of engagement letter, you can use it. Then return representation, this is again very important, which you need to do it. Again, our guidance note also again provide you the format of a return representation which you might obtain. So you can take that, you can make modification and then accordingly use it. Then accounting policies of the bank. So accounting policies of the bank generally comes as part of the closing circular of the bank. Please verify that accounting policy. It is very critical, sir. Why it is so critical, sir? Please understand. आप suppose करो एक बैंक तो हो सकता है वो कहता होगा कि मैं लॉकर रैंक को कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर करता हूँ. कोई बैंक हो सकता है लॉकर रैंक को अकाउंट फॉर करता है एक्रूअल बेसिस पे ऊपर. तो वो कैसे पता चलेगा मेरे को unless until I read the accounting policies, any changes, any modification in those accounting policies. So this is very critical. Okay. Is it clear up till now, sir? कुछ सर्टिफिकेट्स है सर जो हम साइन करते हैं, ठीक है. अब होता क्या है सर, प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, क्या होता है हमने एक ऑडिट किया, उसमें काफी टाइम लगाया, NPA ढूंढने में काफी टाइम लगाया. जब हम फाइनलाइज कर चुके होते हैं ऑडिट और हम साइन करने की बारी आती है, उस टाइम हमारे को लिस्ट दी जाती है डॉक्यूमेंट्स हमको साइन करना है और उसमें कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, नाइदर वी हैव द टाइम टू एक्चुअली वेरीफाई दैट सर्टिफिकेट, नॉट दे वांट अस टू वेरीफाई इट. दे से कि सर इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑल सिस्टम जनरेटेड, ठीक है. और हम उनकी बात को बिलीव कर लेते हैं और वो सर्टिफिकेट्स को साइन करके आ जाते हैं. But this is not actually right, sir. Our responsibility towards a certificate is much more than an audit. Certificate is an absolute assurance, true and correct, while an audit report is only a true and fair and reasonable assurance. Okay? So we need to be very careful about the certificates we are signing. Now there is a guidance note of our institute, guidance note on reports or certificate for special purposes, revised 2016 edition. Version. Please refer to this guidance note, and the format of this guidance note, some important points is also given in the guidance note of audit of banks, the 2022 edition. Please refer to that edition also. क्या important है सर, ये जो guidance note में ये format उन्होंने prescribe किया है, it helps you in understanding कि भाई जहाँ जहाँ पे आप specially 100% वेरीफाई करने की पोजीशन में नहीं है सर्टिफिकेट. जैसे इंटरेस्ट सबमिशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, आप इसको 100% वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आप इस फॉर्मेट को यूज करिए. इस गाइडेंस नोट के अंदर जो प्रोवाइडेड है, दिस फॉर्मेट actually helps you in reducing your risk, audit risk, as to the correctness of the certificate. It says that we are only giving you a true and fair view and not a true and correct view. So please refer to this guidance note and the format which is prescribed therein, and use it to cover your risk as to the certificate which you are signing. ठीक है. इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करते हैं सर. जैसे बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेबल, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, तो इससे रेलिवेंस में 3 सर्कुलर्स इस साल आए हैं सर. 2 सर्कुलर्स में तो उन्होंने एक क्वार्टर के लिए प्रोग्राम को एक्सटेंड किया. थर्ड जो आया सर्कुलर सर, वो एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2021 से. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर, इसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन आ गई है. So circular for the half year was different to the circular for the last half of the year. 1 अक्टूबर से उन्होंने एक तो क्या किया, पहले क्या था, MSME एक्सपोर्टर्स को 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था. This they have reduced to 3% for MSME manufacturer exporters. अगर MSME के ट्रेडर एक्सपोर्टर है तो उसको 3% भी नहीं मिलेगा, उसको 2% मिलेगा. And in all other cases earlier it was 3%, they have reduced it to 2%. इसके अलावा 6 HS लाइन थी टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट सेक्टर की, वो उन्होंने इसको बाहर कर दिया. उन केसेस में इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा.
और अगर आपने उस कंपनी ने पीएलआई स्कीम में कोई बेनिफिट लिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, तो उनको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड द बेनिफिट नीड टू बी पास ऑन टू द एक्सपोर्टर एंड देन ओनली क्लेम फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। So I think agriculture would be important. Sir, please confirm whether it has been covered earlier or not. ये ना हो कि हम डुप्लीकेसी ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो। क्या ये पहले किसी सेशन में कवर्ड है या किसी और ने कवर करना है किसी और सेशन में? और अदरवाइज आई शुड शेयर विद द ऑडियंस। एनीबडी फ्रॉम द ब्रांच सर? सर मैं कवर करूं नहीं करूं बस इतना सा बता दीजिए मेरे को। Interest subvention in case of agriculture. Should I cover, should I not cover? म्यू जी, सर इसको कवर करने की जरूरत है क्या? सर आप देख लीजिए, अगर जरूरी है तो आप देख लीजिए। वैसे एग्रीकल्चर के लोन काफी कम है अपने यहाँ पे, तो एक बार आप, जरूरी नहीं है सर। मैम का रिप्लाई भी यही आ रहा है कि जरूरी नहीं है। ठीक है सर, विल स्किप इट सर। ऑल राइट सर, थैंक यू। एक सर पिछली बार एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम आई थी, ठीक है। तो पिछले साल तक ये आपकी एग्जिस्टिंग जो लिमिट्स थी उसका 20% द गवर्नमेंट वाज गिविंग एज अ फर्दर लोन, and this further loan of 20% was covered by the guarantee of a agency which was formed for this purpose, जिसका नाम था NCGTC, ठीक है। तो उसको उन्होंने कवर किया कि भाई 100% of the amount of the loan including any interest levied over it would be covered by the guarantee of NCGTC, ठीक है। तो हमने काफी सारे लोन्स पिछले साल में देखे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है सर, प्लीज आप जो मेरे को, आपको मैं क्यों कवर कर रहा हूँ स्पेसिफिक पॉइंट को, कि 90 डेज के अंदर अकाउंट का एनपीए बनने के, द अकाउंट वाज टू बी मतलब इन्फॉर्म्ड दैट द अकाउंट हैज बिकम एन एनपीए टू दिस एजेंसी एनसीजीटीसी, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बैंक्स ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, और इससे क्या हो रहा था कि their guarantee which NCGTC has given, so they were treating this as secured by that guarantee, that would disappear. तो उन्होंने NCGTC ने एक वन टाइम एक्सटेंशन दिया है इसका कि आपने डिले से इन्फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस बारी एज अ वन टाइम मेजर, पर उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपका गारंटी का अमाउंट है वो 1.5% से हम रिड्यूस कर देंगे एज अ पेनल्टी। तो अगर आपका 100 रुपए का लोन था तो 100 रुपए की गारंटी थी, वो अगर आपने 90 डेज में इन्फॉर्म नहीं किया तो वो गारंटी का अमाउंट 98.5 रह जाएगा। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज एप्लीकेबल दिस ईयर, प्लीज रेफर टू दिस गाइडलाइंस एंड इंश्योर कि अगर आपकी ब्रांच के अंदर कहीं पे डिले है तो जो उसकी सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन है उसको आप मॉडिफाई कर दे किसी तरह। एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस के अंदर सर 3 तरह से क्लासिफिकेशन होती है जो आपको दिखती है। एक होती है सर जिसको हम सभी देखते हैं क्वालिटी वाइज, विच इज स्टैंडर्ड एंड एनपी, और स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एसएमए 012, फिर एनपीए में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, ठीक है। और एडवांसेस को हम सेक्टर वाइज भी करते हैं, प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी और सिक्योरिटी वाइज भी करते हैं, यानी सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, सिक्योर्ड बाय गारंटी और अनसिक्योर्ड। अगर इनमें से किसी में भी आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है सर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ एमओसी। आपने प्रायोरिटी सेक्टर लोन को नॉन प्रायोरिटी में कर दिया, नॉन प्रायोरिटी को प्रायोरिटी में कर दिया, या सिक्योरिटी की वैल्यू गलत दिखा रखी है, या आपने क्वालिटी वाइज जो हम सब डिस्कस करते हैं वो हम, तो उसका हमारे को एमओसी देने की जरूरत है, ठीक है। दिस वी नीड टू कीप इन माइंड। सो the only MOCs are not in relation to only quality, it can be in relation to sector wise also and security wise also.
अब इसमें एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल हमारे ऑडिट के लिए सर, एक सर्कुलर आया था लास्ट ईयर, मैंने आपसे बात भी की। ये सर्कुलर आया था सितंबर 14, 2020 को, but this circular was to be implemented with effect on June 30, 2021 at the last. Banks have given a compliance certificate to the RBI saying that they have complied with this. What is the compliance which they have given? That basically RBI को क्या मांग रहा है उनसे? वो मांग रहा है कि system shall handle both downgrade and upgrade of accounts straight through process without manual intervention. तो किसी अकाउंट को NPA बनना है, किसी अकाउंट को NPA से स्टैंडर्ड बनना है, it should be done through an automated system, straight through process system, and there should not be any manual intervention. Calculation of provision, income recognition, derecognition shall be system driven. ठीक है? Exceptions may be granted. Of course, they would have to give some kind of a leverage to the banks कि किसी जगह पे अगर उनको जरूरत है, because of some logical reason, they can give an exception which are expected to be minimum and temporary. Manual override to have at least 2-level authorization and preferably from a centralized location. और सबसे important क्या है हमारे लिए as an auditor, such manual override shall have audit trails and subjected to audit by concurrent statutory auditors. तो basically it means कि इस बार जब आप audit करने जाएंगे तो सबसे पहले एक आपको रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन करना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से कि इस सर्कुलर को रेफर करते हुए कि भाई कितने केसेस ऐसे हैं जहां पे आपने मैनुअल इंटरवेंशन किया है इन दिस ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ डाउनग्रेड एंड अपग्रेड ऑफ अकाउंट, प्रोविजन एंड इनकम रिकॉग्निशन, डीरेकॉग्निशन। जितने केसेस में उन्होंने मैनुअल इंटरवेंशन किया है इसको आपको वेरीफाई करना है 100% टू वेरीफाई कि जो ये इंटरवेंशन है ये सही है कि नहीं। Why it is so critical? The system is saying, as per the parameter fed into the system, that the account needs to be classified as an NPA. But the branch is saying that we will not classify the account as an NPA. तो क्या हमें इसको चेक करना चाहिए? क्या ये important नहीं है कि हम उसको verify करें कि the reason provided by the branch for not classifying the account as an NPA are genuine? I think it is very critical. और of course अगर आप इसको orally पूछेंगे सर तो हो सकता है ब्रांच आपको कह दे कि सर इसकी जरूरत नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हुई, बट यू शुड टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देयर साइड एज टू हाउ मेनी केसेस आर देयर। और ये जो मैनुअल ओवरराइड उन्होंने किया है इस ऑडिट ट्रेल को दे हैव टू मेंटेन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years and RBI is also saying that they shall not be tampered with during storage. This is something which is very critical, sir. ठीक है सर। अब ये तो हो गया सर बेसिक कवरेज हमारा जो हमें करना था। किसी ने मेरे से पूछा था अबाउट एग्रीकल्चर एडवांसेस स्पेसिफिकली, तो मैं 5 मिनट में आपको मेरे हिसाब से क्या है एग्रीकल्चर एडवांसेस का फंडा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एनपीए इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस। अब सर आप एक रूरल ब्रांच को ऑडिट करने गए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है सर ब्रांच के अंदर तो बहुत सारे के एडवांसेस होते हैं, केसीसी भी होते हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा केसीसी ही होते हैं, बट इसके अलावा भी एडवांसेस होते हैं। जैसे किसी को हाउसिंग लोन के लिए दिया, किसी को आपने कोई मशीनरी खरीदने के लिए दिया, कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया, किसी कार को खरीदने के लिए दिया, किसी पेट्रोल पंप को आपने सीसी लिमिट दे रखी है, किसी ट्रेडर को आपने कोई सीसी लिमिट दे रखी है, वो कपड़े का शॉप खोल के बैठा है लोकल मार्केट में उसको दे रखी है। तो क्या वो सारे के सारे एग्रीकल्चर एडवांसेस से कवर्ड है? तो उसमें कुछ जो हम सुनते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और क्रॉप सीजन, वो सब कुछ उसमें सभी केसेस में लगता है? तो ऐसा नहीं है सर। तो देयर इज एनेक्सेड टू द मास्टर सर्कुलर। वो मास्टर सर्कुलर 2015 का हो या जो अभी इस बार अक्टूबर 2021 में आया, वो दोनों में एक एनेक्सेड 2 है व्हिच गिव्स यू द लिस्ट ऑफ फार्म क्रेडिट्स। So whatever loan falls in the definition of farm credits, they are covered by this concept of crop season. Any loan which is not covered within the definition of farm credit, they go as per the normal 90 days norms. ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा। अब इसमें कुछ क्रॉप सीजन का फंडा होता है सर। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड टेक्स मोर देन अ ईयर, एंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है वो शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मेरी जिस जगह पे मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ वहां पर कौन सी क्रॉप होती है?
कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, वो 6 महीने में उगती है या 9 महीने में उगती है, 12 महीने में उगती है या 2 साल में उगती है। तो इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है हर एक स्टेट के अंदर। वो आपको बताती है कि जी हमारी स्टेट में कौन कौन सी फसलें होती है, कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, हार्वेस्ट कब होगा उसका, और उसका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब कि अगर आप कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगा रहे हो अपनी जमीन पे तो उसके लिए कितना आपको फाइनेंस। तो दिस इज दी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिसाइडेड। ठीक है, तो आपको हार्वेस्ट पीरियड पता चलेगा। अब इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में कुछ ऐसा कहता है सर्कुलर, द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो इट मे बी प्रिंसिपल और इट मे बी इंटरेस्ट, दे ऑल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स, 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ कहता है कि 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, तो ये क्या कंसेप्ट है, इसको इस फ्लो चार्ट से समझते हैं सर। तो ये चार्ट है, इज इट विजिबल सर, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी? इज इट क्लियरली ओके? तो सर ये जो चार्ट है ये सिर्फ मेरा वर्जन नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, ऑफ हाउ एन एनपीए क्लासिफिकेशन हैपेंस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ब्रांच या केसीसी के केस में। इट इज आई वाज पार्ट ऑफ द गाइडेंस नोट रिवीजन एक्सरसाइज लास्ट ईयर। तो ये चार्ट मैंने लास्ट ईयर गाइडेंस नोट के अंदर आई वाज टास्क विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ राइटिंग ऑन फॉरेक्स एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के चैप्टर में मैंने ये एग्जांपल को डाला, व्हिच आफ्टर डेलिब्रेशन द कमेटी डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन द रिवाइज्ड फॉर गाइडेंस नोट, and this year also this has become part of the guidance note. I think this is a very important way of understanding this area, ठीक है, to my mind sir. और good thing is when it becomes a part of the guidance note, you can always claim कि अगर कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कल को बैंकर को समझाना है कि सर देखो मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा कह रहा है, मैं को इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सर सैंक्शन डेट है अप्रैल की, और एक होगी अक्टूबर की, अक्टूबर नवंबर में होगी, अप्रैल मई में। तो शॉर्ट टर्म 2 तरह की क्रॉप्स आती हैं शॉर्ट टर्म में, खरीफ एंड रबी। पहले हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो 6-6 महीने की नियरली क्रॉप्स होती हैं। तो अप्रैल मई में दिया, सितंबर में हार्वेस्ट हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में दिया तो मार्च में, ठीक। तो 6-6 महीने की क्रॉप। पर इसमें बेसिकली एक फंडा आपको समझना है सर, और एग्रीकल्चर एडवांसेस में ये फंडा समझना बहुत जरूरी है, विच इज कि भाई वो कहते हैं फार्मर की रीपेइंग कैपेसिटी इज ओनली व्हेन दे सेल द क्रॉप, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर इज व्हेन दे सेल द क्रॉप। तो सेलिंग ऑफ द क्रॉप बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो हार्वेस्ट होते क्या वो सेल कर देगा फार्मर? नहीं, तो उसको कुछ पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। उस पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के बाद वो जाके उसको गुड्स को सेल करेगा, और उससे उसको पैसा रिसीव होगा, उससे वो लोन रिपे करेगा जो उसने बैंक से लिया है। तो देयर इज सम एडिशनल टाइम व्हिच इज गिवन बाय द बैंक आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया रीपेमेंट ड्यू डेट जो हमने दी 3 महीने और एक्स्ट्रा दिए फार्मर को। तो सितंबर का हार्वेस्ट हुआ तो 31 दिसंबर 2019 हमने क्या दिया कि आपकी रीपेमेंट की ड्यू डेट 3 महीने हमने और दे दिए। वहां पे मार्च था तो हमने 30 जून 2020 दे दिया फार्मर को टू रीपे दी लोन। So this becomes the repayment due date. Interest subvention जो 3% का मिलता है हमने डिस्कस नहीं किया, but it is only available if the repayment happens by 31st December in first case and 30th June 2020 in second case. If the repayment happens thereafter, उसके बाद मिलता है repayment आता है तो उसको 3% interest subvention नहीं मिलेगा, ठीक है। डेट ऑफ irregularity, अगर ये अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं आती, this account would become overdue, irregular on 31st December 2019 itself. This Ajay ji would have clarified, would have told you that there is a clarification कि अगर overdue का concept में कि if the payment is not received on the date, due date fixed by the bank, it becomes an NPA on the same day. Oh, sorry, it becomes an overdue on the same day. So 31st December 2019 को account overdue बन जाए. Now there is a concept of 2 crop season before the account becomes an NPA, ठीक है। तो क्रॉप सीजन क्या है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे थी कस्टमर को मेक द रीपेमेंट, he has not availed the opportunity. Now we are going to give him 2 more opportunities to repay the loan. What are that opportunity? तो पहली अपॉर्चुनिटी हमने दी 30 जून 2020, यानी जो नेक्स्ट फसल आई
और उसके बाद उसको बेचा, तो उसके बाद नेक्स्ट बाई पैसा आएगा 30 जून 2020। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कम्स टू एन एंड ऑन 30th June 2020। ही डज नॉट पे बाय देन आल्सो, नेक्स्ट उसके पास फसल आएगी और उसको वो बेचेगा और पैसा आएगा 31st December 2020। ठीक है, यहाँ पे 2019 था, उसके बाद 31st December 2020 को सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी उसको मिली। तो यानी अगर वो 31st December 2020 तक भी पेमेंट नहीं करेगा तो अकाउंट वुड स्लिप इनटू एनपीए कैटेगरी। ठीक है, यानी करीबन करीबन सर 21 महीने लग रहे हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप के केस में बिफोर द अकाउंट स्लिप्स इनटू एनपीए कैटेगरी। Is it right, sir? Is it clear now? Somebody has asked a specific question in regard to this. Is it clear, sir? I'm not getting into long term and all right now because that was not actually part of my duty. But is it clear? Because you have specifically asked a question regarding this. चलिए, so I hope it is clear to you. ठीक है, एक चीज और बिफोर आई क्लोज दिस कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस सर, ये अगेन आई एम श्योर अजय जी ने इसको बड़ी एडिक्वेटली आपको एक्सप्लेन किया होगा कि सर दो तरह के केसीसी हैं बैंक्स के अंदर। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ऐसा मत करिएगा कि आपने केसीसी वर्ड सुना और मान लिया कि जिसपे क्रॉप सीजन लगने वाला और कुछ 21 महीने 2 साल लगने वाले हैं बिफोर द अकाउंट कैन बिकम एन एनपी। दिस इज नॉट ट्रू सर। तो केसीसी दो तरह के हैं बैंक के अंदर, वन इज दी केसीसी फॉर क्रॉप लोन जिसमें क्रॉप सीजन का फंडा लगता है, और एक है केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्रीज एंड फिशरीज। तो इसका मास्टर सर्कुलर भी अलग है सर, और इसके अंदर ये क्रॉप सीजन का फंडा नहीं लगता, इसके अंदर ये नॉर्मल 90 डेज नॉर्म्स के हिसाब से अकाउंट एनपीए बनते हैं। Can you please mention the circular number for the overdue where interest और इंस्टॉलमेंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट सर? सर आप इस बार 3 सर्कुलर्स आए हैं आरबीआई के, एक अक्टूबर में आया है 2021 में विच इज द न्यू मास्टर सर्कुलर ऑन आइडल नॉर्म्स, और उसके 2 क्लैरिफिकेशंस आए हैं सर। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो ब्रांच को शेयर कर देता हूँ और वो आप उसको देख सकते हैं सर्कुलर्स को, एंड देन यू विल बी क्लियर। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस तरह का वो फंडा है सर। अगेन आई एम गेटिंग ड्रैग्ड इनटू समथिंग व्हिच was outside my scope, but let me show you something. So what they are saying basically is that the borrow account shall be flagged as overdue by the lending institution as part of their day end processes for the due date irrespective of the time of running such process. पर ये एग्जांपल उन्होंने दिया है सर, ये मैंने एग्जांपल आपको ये ब्रेकअप कर दिया, बट ये एग्जांपल उस सर्कुलर का पार्ट ही है। उन्हें का ड्यू डेट ऑफ लोन अकाउंट 31st March 2021, सपोज full dues not received before the lending institution runs the day end process for this day. तो 31st March 2021 को जब भी day end process रन किया बैंक ने, तब तक कंप्लीट अमाउंट इसका रिकवर नहीं हो पाया था। डेट ऑफ ओवरड्यू वुड बी 31st March 2021 itself, सेम डे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप इसमें एनपीए की डेट देखेंगे 29 जून 2021 इन्होंने लिखी है, तो 29 जून का मतलब है 29 डेज ऑफ जून, 31 डेज ऑफ मई, तो 60 डेज हो गए, 30th डे ऑफ 30 डेज ऑफ अप्रैल, तो टोटल मिला के 90 डेज है। जबकि एक्चुअली एनपीए बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं मोर देन 90 डेज, तो एक्चुअली दे वुड आल्सो कंसीडर 31st March एज वन डे, so it will become 91 days as on 29 June 2021. ठीक है, so this is how they want us to calculate the NPAs this time. Now, this is actually a clarification. So as per them, this is how we should have been doing it. If we were not doing in this fashion, we need to improve, we need to update ourselves and start calculating the date of NPA as per the formula given by the RBI. So this is the answer. So this is what I wanted to discuss. There are many other things which we can discuss, but because there is a limitation of time, sir, and everything good needs to end. So I'll open it to the question and answer session, sir, and then I'll call it a day, sir. Please, any questions which we want to discuss, sir?
सर कोई क्वेश्चन नहीं है? एक सर एक नया चेंज भी आया है इस बार, लेट मी ऑल्सो bring it to your notice. Additional provision for existing loan exposure of the bank है, this financial institution brought on board at the time of distress, whose name appear more than once in the list of willful defaulter, then स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर भी 5% का प्रोविजन करना। सब स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर अगर वो 15% की रिक्वायरमेंट थी, वो 25 हो जाएगी, 25 थी तो 40 हो जाएगी, और 40 थी डाउटफुल के अंदर तो वो 100 हो जाएगी। तो कुछ एडिशनल प्रोविजंस आपको करने हैं। तो इस बार जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगेन लेना है कि हाउ बैंक आर मैचिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग दैट द एग्जिस्टिंग जो एक्सपोजर्स हैं उसमें कोई बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं अपीयर कर रहा, उनमें से जो डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, वो कोई विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में नहीं आ रही। ये कैसे बैंक आइडेंटिफाई कर रहा है? और बेस्ड अपॉन द कंफर्मेशन ऑफ द बैंक एंड चेकिंग द प्रोसेस, देन यू कैन चेक कि whether any additional provision is required in any of the cases. So this we need to also verify. Okay. सर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज बताइए प्लीज। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, बैंक ऑडिट का सेमिनार है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो मैंने पढ़ाया हो सबकी समझ में आ गया हो, या हो सकता है कोई और सेमिनार से और किसी डेट से आपको कोई क्वेश्चन हो जो उस टाइम आपने ना पूछा हो। तो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी सर, आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस यू हैव। वी हैव अनदर like 10-15 minutes with us. मोहित जी कोई क्वेश्चन है क्या जो मैंने मिस कर दिया बीच में? Okay, so हाँ जी sir, there is a query from a member in the chat box. CA Priyadarshini ji is asking, in some branches borrow money from outside market for a week, credit in loan account and then take it back except in rural agri advances to save them from NPA, agriculture, KCC, etc. Can you mention them in MOC? Sir, if you are able to gather enough evidence to prove, then in that case definitely you can mention it in the MOC, sir. Another reason why agri advances there is a problem, sir, is because of diversion of funds. तो वहाँ पे क्या है सर कि टिपिकली सारा चीजें जो है कैश में चलती है, कैश इकोनॉमी है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक्चुअली है ना दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, पर अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर उसका यूज होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि if there is a diversion of fund and you are able to prove there is a diversion of fund, then I think वो उस केस के अंदर हमारे को वो अकाउंट को, because diversion of fund, if you look at the master circular of fraud itself is a fraud, ठीक है? तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। एंड इफ यू आर एबल टू गैदर, जो आपने एग्जांपल दिया, इफ यू आर एबल टू गैदर द एविडेंस फॉर इट, then definitely you have a right to classify that account as an NPA. Of course, sir. So it is a evergreening, of course, and window dressing. I agree, sir. किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझसे याद आया कि जी फैसिलिटी वाइज और बोरोवर वाइज का कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो ये आरबीआई का नॉर्म्स है कि ऑल फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक फॉर बोरोवर and investment in all the securities issued by the borrower will have to be treated as NPA and not the particular facility investment or part thereof which will become the NPA. So basically जिसको हम कहते हैं कि भाई borrower wise, so if one account of the borrower becomes an NPA, every account becomes an NPA. But इसकी कुछ exceptions हैं। So एक तो exception है the debit arising out of defaultment of letter of credit or invoked guarantees which are parked in नहीं ये नहीं sorry एक second हाँ ये है the bills discounted under LC favoring a borrower may not be classified as an NPA when any other facility granted to the borrower is classified as an NPA. ठीक है? तो bill discounted under LC, this is one. Second, where document under LC are not accepted on presentation or the payment under the LC is not made on the due date by the LC issuing bank for any reason and the borrower does not immediately make good the loss, then in that case this bill discounted under LC can become NPA.
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इशू क्या होता है, the LC is issued by a bank, so there is a somehow there is the bank are not likely to go back on their words, and they would honor the LCs. So RBI feels that in those cases, because the reliance is not on the credit worthiness of the borrower, it is on the basically the image or the credit worthiness of that bank which has issued the LC. So in those cases, they have provided an exception. Also, in cases where, like in case of loans against NSCs or KVPs or LIC policies or fixed deposit, in those cases, the account do not become an NPA, right? So we know these are exceptions to the basic rule. So in those cases also, if the other accounts of the customer becomes an NPA, they may not be classified as an NPA unless until as RBI says, the adequate margin is available, then the account may not be classified as an NPA. So Mayank is asking, in case previous projection does not deal with actual financials, like substantial variation in stock value and stock statement for March 21 does not match with audited balance sheet, then how to proceed with this case, sir? So I think that is something which we have been seeing. These are more so important when projections itself are being used for the purpose of calculation or as to how much limit is to be granted to the borrower. So in cases where there is a product which says that based on the projection, the next year projection of sales, say 20% or 25% limit can be granted to the borrower. So we sometimes see a lot of projections being given which are substantially higher than the actual the sales of the borrower. In that case, you can, if you are able to see that happening every year, year to year, then you can keep your step down and say, sir, this is basically trying to evergreen the loan, or this is an incorrect loan verification. And in those cases, you also need to see for the inherent limitations in the account, inherent weakness in the account, and see whether the account also needs to be classified as an NPA. So if the, say, for example, the sale of the customer is only 50 lakhs, and the limit which has been granted is, say, 40 lakhs. So how can he use with 40 lakh limit for a sales to of 50 lakhs only? So somehow either he will be doing some kind of diversion of fund, will be using those short-term facilities for the purpose of acquiring some properties or using that money outside the business or whatever, or otherwise there is some problem with the financials of that customer. So that also need to be verified. I hope I have answered your questions, sir. Or any other questions you have, sir? I request members to please share their queries if they have. I guess none of the members have any query. Okay, so that is really great. So maybe. So with your permission, shall we conclude, sir? Yeah, please, sir, please. Thank you very much, sir. Thank you for such a wonderful and interactive webinar and session. I guess, sir, can you explain significant erosions? Sir, there is a query from Dipti Rohilla ji. Sir, can you explain significant erosions? So, sir, if we look at the concept of significant erosion as RBI has taken it, it is basically that if the erosion in value is more than 50% as assessed last time. So what was the last assessed value? If there is an erosion of more than 50%, or then of course they consider it as a substantial erosion of the value. And if the erosion of value is more than 90%, then in that case they feel that the account maybe sometimes needs to be directly classified as a loss asset, and the whatever 10% value is there, that can be ignored. So that is considered as a substantial erosion. So you need to basically verify. And this, sir, value of the security is something which is very critical also. I tell you why. Is that because what we have seen practically a problem in the banks is that they put up the value of the security at the time of sanction of the loan. So say they have taken a car loan, somebody has taken a car loan, the value of the car was 10 lakh rupees. So they will put the security value as 10 lakh rupees.
and they do not modify that security value throughout the life of the loans. Wherein what RBI requires you to put up the realizable value of the security. Now, in case of a standard account, it might make a difference, but of course, when the account slips into a NPA category, the realizable value. So, an account says in D1, doubtful category. So, what the provision is to be done is unsecured portion 100%, secured portion say 40%. Now, if you change the unsecured portion itself, so you reduce the value of the security, and the unsecured portion goes up, then in that case, even when you are not changing anything except the security classification, the provision would go up. So it would require MOC. So that correct classification, the correct value of the security needs to be correctly fitted into the system. And this is something which we have been always pointing out through our reports also, that the system of banks as to the updation of the security value is not working correctly. Okay, so this is something which we need to do. Thank you, sir. Sir, on branch of entire Gurugram branch, we thank you our guest speaker, CA Lokesh Gupta ji, that sir, we are highly obliged that you gave us time from your most busiest schedule and period. And on behalf of Gurugram Managing Committee, I thank you each and every participant who have joined us for this webinar. I thank you, all of you. See you all tomorrow, sharp at 4 p.m. Thank you. Thank you, sir. We are closing the webinar. Thank you, sir.